अब आता है क्यूरेटिव पिटिशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 क्यूरेटिव उपचारात्मक पिटिशन. The concept of curative petition was evolved in the Supreme Court of India in the landmark case of Rupa Ashok Khurra and Ashok Khurra 2002. It is the last resort available for redressal of grievances in cases where review petitions have already been dismissed. इसमें क्या होता है, सॉरी, कि मतलब कि रिव्यू की फैसले का रिव्यू कीजिए, अगर वो भी नहीं कर रहा है तो क्या क्यूरेटिव पिटीशन होता है. इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर्स अंडर आर्टिकल 142 कैन रिकंसिडर इट्स जजमेंट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. इसमें मतलब रिकंसिडर कर सकता है अपने जजमेंट को लेकर, ताकि उसके जजमेंट गड़बड़ ना हो. Article 142 provides Supreme Court has the power to pass any decree or order necessary for doing complete justice. मतलब complete justice के लिए कोई भी डिक्री जो नेसेसरी हो वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ताकि कंप्लीट जस्टिस मिले. द पिटिशन इज हियर्ड बाय द सेम बेंच ऑफ जजेस हु डिलीवर्ड द ओरिजिनल जजमेंट. और ये जो होता है, ये पिटिशन उन्हीं जजमेंट द्वारा सुना जाता है जो जिन्होंने पहले ओरिजिनल जजमेंट दिया है. ठीक है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर. आर्टिकल 137 grants the Supreme Court the power to review any judgment or order by it. The power is exercised subject to any law made by Parliament or any rule made under Article 145. The Supreme Court Rule 1966 govern the procedure for filing a review petition. A review petition can be filed on the ground of discovery of new evidence, error apparent on the face of the record, violation of the principle of natural justice. Discovery of new evidence apparent. ठीक है. Which one of the following is correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court of India? B. Supreme Court of India has the power to review its judgment or order. Which one of the following is correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by Supreme Court of India? So Supreme Court has the power to review its judgment or order. Article 137. The power of review is inherent in judicial function of the Supreme Court. As per Article 137, Supreme Court can review any judgment pronounced or order made by it. This power is fundamental to correct any gross miscarriage of justice. The review petition must be filed within 30 days from the date of judgment or order. Which one of the following is correct about Supreme Court regarding its judgment? It can change the judgment. बिल्कुल सही है. It can't change it. ऐसा नहीं है. Only the Chief Justice of India can change. ना जो जिसने मतलब only the Ministry of Law can change the ना. As per Article 137, Supreme Court has the power to review its judgments. A review petition can be filed to change the judgment if there is an error apparent on the face of record. मतलब कुछ error हो गया है. New evidence discovered, violation of natural justice happened. The Supreme Court may change its own judgment through review petitions or curative petitions. Article 142. Complete justice देने के लिए वो आर्टिकल 124 के से क्या पूरा जस्टिस क्यूरेटिव पिटीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitation. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations
or provisions contained in ordinary laws can't act as prohibition or limitation on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? Complete justice के लिए ठीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक मतलब अगर उसको कंप्लीट जस्टिस करना है तो वो पार्लियामेंट के लॉज के बाहर आके भी जस्टिस कर सकता है। आर्टिकल 142 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पास ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। द कोर्ट्स पावर्स अंडर दिस आर्टिकल ओवरराइड ऑर्डिनरी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। नो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन कैन रिस्ट्रिक्ट द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सरसाइज of power under Article 142. ठीक in India, judicial review implies the power of judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive orders. बिल्कुल सही। Judicial reviews the part of the judiciary to examine the constitutionality of legislative and executive orders. It ensures that any law or executive order that violates the constitution can be declared void. It is a basic feature of constitution and can't be abrogated even by an amendment. इसे हटाया नहीं जा सकता है भले अमेंडमेंट कर दिया जाए। स्कोप लेजिस्लेटिव एक्शंस लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एक्सिक्यूटिव एक्शंस ऑर्डर्स नोटिफिकेशन एंड एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। क्यूरेटिव पिटीशन ए यूनिक कंसेप्ट इन इंडिया एम टू रिमीडाइंग ग्रॉस इनजस्टिस इवन आफ्टर ए रिव्यू पिटीशन हैज़ बीन डिसमिस्ड। अगर रिव्यू पिटीशन डिसमिस भी हो गया है तब भी क्या हो सकता है? क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा उसको आर्टिकल 142 के द्वारा फिर से उसको देखा जा सकता है ताकि कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 इंटीग्रल to ensuring the supremacy of the constitution and maintaining rule of law। ठीक आर्टिकल 142 known for its completeness of justice where supreme court can go beyond statutory limitations to ensure justice। article 137 ensures that the supreme court decisions are not final or infallible thereby allowing correction of mistakes। मतलब वो फाइनल और इनफेलिएबल नहीं होता है। ठीक उसमें भी करेक्शन की गुंजाइश होती है। ठीक जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both central and state governments. If the law is found to be inconsistent with the constitution, the judiciary can declare it null and void. Judicial review is the power of judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive order of both central and state government. If the law is found to be inconsistent with the constitution, the judiciary can declare it null and void. The power of judicial review is vested in both Supreme Court and High Court as Article 13 of Indian Constitution. The doctrine of judicial review was inherited from the US system and was first propounded in the landmark case of Marbury versus Madison 1803. Central and state government. If the law is found to be inconsistent with the constitution, the judiciary can declare it null and void. The power of judicial review is vested in both Supreme Court and High Court as Article 13 of the Indian Constitution. The doctrine of judicial review was inherited from the US system and was first propounded in the landmark case of Marbury versus Madison 1803. Judicial review implies the right of the court to declare any law or order invalid if it is conflict with the Constitution.
Judicial review means that can declare illegal any law of the state. सही है. The power of judicial review is vested in both Supreme Court and High Court. Both central and state. Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislature enactment of executive order of both central and state government. Central और state government दोनों का executive order का, ठीक, वो कर सकते हैं. If the law is found to be inconsistent with the constitution, the judiciary can declare it null and void. ठीक. The power of the judicial review is vested in both Supreme Court and High Courts as per Article 13 of the Indian Constitution. The doctrine of judicial review was inherited from US system and was first propounded the landmark case Marbury versus Madison 1803. Declare any law or order invalid if it is in conflict with Constitution. Judicial review is the power to invalidate a law or order that violates the Constitution. It safeguards fundamental rights and maintains supremacy of the Constitution. This power is derived mainly from Article 13, which declares that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be void. Judicial review acts as check on the powers of the legislature and executive. Judicial review acts as checks on the powers of the legislature and the executive. ठीक है. Legislature and executive. Consider the following statement. The Constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड आर्टिकल 137 to the citizens' liberties and to preserve the ideals on which constitution is based. The concept of basic structure is not explicitly defined in the Constitution. The doctrine was first evolved by the Supreme Court in Keswanandan Bharti case 1973, where the court ruled that Parliament could not amend the basic structure of the Constitution. Elements like federalism, secularism, fundamental rights, and democracy are considered part of this basic structure, but they are judicial interpretation and not textual definitions. The judicial review is an integral part of the basic structure as ruled by the Supreme Court in several cases. It serves as a mechanism to uphold the Constitution and protect citizens' liberties by examining the constitutionality of legislative and executive actions. In India, the power of judicial review is enjoyed by the Supreme Court as well as High Court. The power of judicial review is vested in both the Supreme Court Article 32 and High Court Article 226. It enables these courts to strike down laws that violate the Constitution. The doctrine of judicial review originated in the USA, Marbury versus Madison 1803, and was later adopted in India. The Supreme Court declared judicial review as basic feature of the Constitution in Indira Gandhi versus Raj Narayan case. ठीक, in Indira Gandhi versus Raj Narayan case. With reference to the Constitution of India, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स दोनों कोर्ट्स वो कर सकते हैं. ठीक है. और कुछ जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जुडिशियल रिव्यू एज ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32. अच्छा, जुडिशियल रिव्यू किस में? वो आर्टिकल 13 में. ठीक. और ये अपना क्या कहा जाता है आर्टिकल 13 में, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को वो करता है. जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट भी कर सकता है.
With reference to the Constitution of India, consider the following. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutional invalid. गलत है, हाई कोर्ट भी कर सकता है. An amendment to the Constitution of India can't be called into question by Supreme Court of India. ये भी किया जा सकता है, ये भी गलत है. मतलब कांट भी मतलब काल किया जा सकता है. हाई कोर्ट्स कैन डिक्लेयर सेंट्रल लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 226. द 43rd Amendment Act 1977 restored the judicial review power of high courts, which was curtailed by 42nd Amendment Act 1976. 43वां अमेंडमेंट जो है इसको रिस्टोर कर देता है. ठीक है. An amendment can be judicially reviewed by Supreme Court if it violates the basic structure. In the Keswanandan Bharti case 1973, it was established that constitutional amendments are subject to judicial review if they affect the basic structure. Judicial review act as a guardian of the constitution, maintaining the rule of law. The basic structure doctrine ensures the fundamental aspects of the constitution and are protected from amendments. The Supreme Court and High Courts are empowered to protect fundamental rights through judicial review. The 42nd Amendment attempted to curtail judicial review by the 43rd Amendment restored it, emphasizing its significance. The system of judicial review is prevalent to both India and USA. इंडिया और यूएसए दोनों जगह जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है. जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस थ्रू विच जुडिशरी एग्जामिन्स द constitutionality of legislative enactments and executive orders. It was inherited from the US Constitution and became an integral part of the Indian Constitution. In India, judicial review is exercised in Article 13, 32, 136, 226 or 227. 13, 32, 136, 226 and 227. 13, 32. Review is exercised under Article 13, 32, 136, 226. The system of judicial review is prevalent in both India and US. Judicial review is a process through which the judiciary examines the constitutionality of legislative enactments and executive orders. It was inherited from the US Constitution and became an integral part of the Indian Constitution. In India, judicial review is exercised in Article 13, 32, 136, 226 और 227. 136 में क्या होता है आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 136 to grant special leave to appeal from any judgment, degree or order. This includes judgment, degrees or order passed by any court or tribunal in India. In UK, the concept is limited since parliamentary sovereignty dominates. The judiciary can't overrule the act of parliament. Therefore, judicial review is prevalent in both India and USA. The scope of judicial review is limited in India. नहीं, USA में भी है. Indian Constitution is a bag of borrowing. बिल्कुल सही है. अच्छा, is limited in India. सॉरी समझने में देर फेर हो गया. नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड कंपेयर टू यूएसए ड्यू टू सेवरल रीजन. क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन द जुडिशियरी कैन ओनली स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स दैट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशियरी वही अमेंडमेंट्स ब्रेक डाउन कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाए. सेपरेशन ऑफ पावर. द इंडियन जुडिशियरी एक्सरसाइजेस सेल्फ रिस्ट्रेन respecting the sovereign function of the executive and legislature. Limited jurisdiction है. Some matters are beyond judicial review, जैसे 5th schedule areas, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सब के जो मतलब ट्राइबल एरियाज हैं. The Indian Constitution is often called bag of borrowing because it has borrowed feature from various constitutions. Parliamentary system of UK, fundamental right from USA. ठीक.
In the essence, what does due process of law mean? The principle of natural justice. Ensure the laws are fair, just and reasonable. Protect individuals from arbitrary deprivation of life, liberty and property. अबे आर्बिट्री अरे यार आर्बिट्री मतलब मनमाना जो वो है आर्बिट्री अरे जो अगर मनमानी तरीके से हानि पहुंचा रहा है इंडिविजुअल का लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को, तो वो इन्वॉल्व फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस इंश्योरिंग बोथ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल फेयरनेस एंड इक्वालिटी। की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं अपने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल फेयरनेस एंड इक्वालिटी। नीमो जूटेक्स इन कोकोसा सुआ, नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन केस। नीमो जूटेक्स इन कोसा सुआ, ठीक। ऑडी एल्टेरम परटेम, हियर द अदर साइड। इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 बाय इंक्लूडिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में अंतर क्या होता है, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रोसीजर established by law means a law is valid only if enacted through correct legislative procedure, and an individual's life or liberty can be taken away only according to that law's prescribed procedure। अब देखिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, अगर कोई मतलब फॉलो कर रहा है लेजिस्लेचर प्रोसेस और वो लॉ बन गया तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया, ठीक। तो लेकिन ये जो है अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये नेचुरल जस्टिस को मानता है, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक। तो मेनका गांधी और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम यूनियन ऑफ इंडिया में 1970 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 बाय इंक्लूडिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो आर्टिकल 21 है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। The procedure established by law is narrower than due process of law because it only addresses the procedural aspect of lawmaking, not the substantive fairness of law, ठीक। अब आते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस। अरे जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हाँ जुडिशियल रिव्यू क्या है, प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज आर्टिकल इंश्राइंड इन आर्टिकल 21। In India, judicial review is primarily based on procedure established by law, as enshrined in Article 21. This means that a law duly enacted by the legislature, if followed properly, cannot be questioned merely for being unjust or unreasonable। मतलब अगर legislature ने कह दिया if followed properly can't be questioned merely for being unjust or unreasonable, तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अनलॉ है या अनजस्ट है या अनरीजनेबल है। द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यूएस कंसेप्ट, आल्सो इन्फ्लुएंस इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस स्पेशली आफ्टर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाउएवर द एक्सप्लिसिट बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय लॉ, लेकिन अभी भी हम लोगों का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ठीक। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जबकि होना चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर the process is due process of routine law or the judicial process in India based on combination of factors. The constitution as per supreme law, it guides the judiciary,
procedure established by law. Laws must follow constitutional procedure. Due process of law involves regular legal procedures. Convention judiciary often follows established convention and precedents. The concept of judicial review evolved differently in India and the USA. While India follows procedure established by law, USA follows due process of law. In the Indian judiciary, especially after Menka Gandhi's case, has harmonized both concepts to some context. Doctrine of natural justice is significant in protecting fairness and equity in judicial decisions. The Indian Constitution, being a product of various legal borrowings, reflects both British and American legal principles. ठीक है. A Constitution Amendment Act may be declared unconstitutional by Supreme Court of India if it removes the right to equality before law from Part 3 and declares it as to be, हाँ, क्योंकि ये basic doctrine है. Establish a 3-tier federal setup in place of existing 2-tier setup. ये basic doctrine में नहीं है, तो ये हो सकता है. Replaces a parliamentary system of executive with presidential one. Establish federal court of appeal to lighten burden of Supreme Court. ये सब हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता. The Supreme Court of India has the power to declare a constitutional amendment act unconstitutional if it violates the basic structure doctrine established in the Keswanand Bharti case 1973. Right to equality, Article 14, is a fundamental right enshrined in Part 3 of the Constitution. As per Article 13(2), the state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights, and any law made in contravention of this clause shall be void. Article 32. If the right to equality is removed from the Part 3, it would violate the basic structure of the Constitution. The Supreme Court is a protector of human rights, final interpreter of Constitution. हाँ, सब है. Supreme Court of India is a final interpreter of the Constitution. Article 141. Protector of the fundamental right and via writ jurisdiction under Article 32. Federal Court, because it settles dispute between center and state. Original jurisdiction. Article 131. Article 131. ठीक. Who has the last authority to explain the Constitution? तो अपना Supreme Court. The Supreme Court of India has the final authority to interpret the Constitution. It acts as a guardian of the Constitution and has the power of judicial review to examine the constitutionality of legislative and executive act. Article 141. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within India. ठीक है. Custodian of the Indian Constitution. Custodian of the Indian Constitution. All questions. अच्छा. Supreme Court as the guardian custodian of India. The Supreme Court ensures the protection of fundamental rights and maintenance the basic structure of Constitution through its judgment. It also acts as final interpreter and arbiter of constitutional disputes. Article 32 and 136 empower the Supreme Court to protect constitutional rights and review cases from lower courts. ठीक है. The Parliament makes laws, but their constitutionality is interpreted and upheld or struck down by Supreme Court. Upheld or struck down by Supreme Court. Hence, correct answer to all this. The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. Supreme Court of India has exclusive jurisdiction. Supreme Court is the guardian regarding constitutional. नहीं भाई, exclusive नहीं है.
हाई कोर्ट भी तय करता है। आर्टिकल 226 सेंट्रल लॉज। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction regarding constitutional. High courts can also review the validity under Article 226. Thus, both Supreme Court and High Court can declare central laws unconstitutional. Supreme Court is indeed the guardian of the Constitution, as it protects fundamental right and maintains basic structure through judicial review. ठीक, judicial supremacy in India, the Constitution is supreme, and Supreme Court is final interpreter of its provision. Custodianship, unlike the UK where Parliament is supreme, judiciary is the custodian of constitutional morality, interpreting fundamental rights. Supreme Court has the ultimate power to protect and interpret fundamental rights. Judicial in India, Constitution is supreme and the Supreme Court is final interpreter of its provisions. Unlike the UK where Parliament is supreme, India judiciary is the custodian of constitutional morality, interpreting the fundamental right. Supreme Court has the ultimate power to protect and interpret fundamental rights. Which of the following cases come under the jurisdiction of both High Court and Supreme Court? ये दोनों किस इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दोनों में आता है। मतलब हाई कोर्ट भी वो कर सकता है 226 के में, और ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है आर्टिकल 32 में। The enforcement of fundamental rights comes under the jurisdiction of both Supreme Court and High Court. Article 32 empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights. It is known as right to constitutional remedies. Article 226 empowers High Courts to issue writs for the enforcement of fundamental rights as well as other legal rights. अब देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कम अंडर ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। ये ओरिजिनल jurisdiction के में आएगा और ये सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल होगा। डिस्प्यूट ये भी ओरिजिनल jurisdiction आर्टिकल 131। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉल प्राइमरली अंडर सुप्रीम कोर्ट jurisdiction, नॉट जॉइंटली विथ हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो वो रिट दायर होंगी वो हाई कोर्ट और उसमें दोनों हो सकती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट। अगर अमेंडमेंट्स को लेकर कुछ वो बात आती है तो वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डज सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32। Article 32 is known as right to constitutional remedies. It empowers citizens to move directly to Supreme Court for enforcement of fundamental rights. Dr. B.R. Ambedkar ji told heart and soul of the Constitution. Article 32 को Supreme Court under Article 32 can issue writs। कौन 5 टाइप की? habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और क्यू वारंटो। Article 74 क्या करता है? Council of Ministers headed by प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब ये बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनको हेड कर रहे हैं, वो एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 56 पर्टेन्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 पर्टेन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, अब अगले मिलते हैं।